Hi there guys, welcome back to my channel Glossips. So आज की वीडियो में बहुत सारी नई चीजें हुई थी और बहुत सारी चीजें काफी सारे टाइम के बाद होने लगी हैं. So the first thing I'm sure that you guys can notice, I've never made this hairstyle ever in my life. I still don't feel like this is me. Simple सी बात है. Life's too short कि मैं अब ये बैठ के सोचूं कि मेरा मुंह बहुत बड़ा लग रहा है और something like that. मुझे करना था, so I did it. You wanna do it? Go ahead and do it. So आज की वीडियो के अंदर जो बहुत सारी नई चीजें होने वाली है उनमें से कुछ चीजें ये हैं, खैर वो नई तो नहीं है, but there are things that I have not done in a really long time. जिनमें से पहली चीज is full glam. You know कि मैं अभी जिस शादी पे भी गई थी वहां पर भी मैंने एक बहुत मिनिमल मेकअप किया, यानी कि उसमें कोई फाउंडेशन नहीं, कोई कंसीलर नहीं, कोई हाईलाइटिंग नहीं, कोई कॉन्टूरिंग खास नहीं थी. So this time I'm actually going ahead with a full face of makeup. This is a full face of makeup with all the tips and tricks that you need to know for creating this really pretty look, yet very simple one. और ये करना भी बिल्कुल मुश्किल नहीं है, सही है. So if you want to go ahead and learn how I've done this, please keep watching. Let's start with today's tutorial. अच्छा, तो सबसे पहले you all know कि अपनी स्किन को प्रेप करना बहुत ज़रूरी है. यानी कि अगर आपकी स्किन बिल्कुल सही से मॉइस्चराइज नहीं होगी, हाइड्रेटेड नहीं होगी, प्रिपेयर्ड नहीं होगी मेकअप के लिए, तो मेकअप उस पर कभी अच्छा नहीं लगेगा, कभी भी नहीं. अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है आप फेस मास्क भी यूज़ कर सकते हैं, बट मेरे पास अभी ज़्यादा टाइम नहीं है, सो आई एम जस्ट गोइंग टू गो इन with this moisturizer right here. I'm loving it these days. इतना कोई next level intense moisturization है इस moisturizer में that I'm flat over it. कुछ ही टाइम हुआ है यूज़ किए हुए, but it's really good. The results are amazing. क्योंकि मैं थोड़ी सी स्मोकी साइड पे जा रही हूँ मेकअप लुक के साथ, यानी बहुत ही नेक्स्ट लेवल डार्क काली आंखें, तो उसके साथ आई लाइक टू हैव कॉन्टैक्ट लेंसेज ऑन, क्योंकि फिर नेक्स्ट लेवल लुक आता है एंड आई रियली लाइक दैट. सो अभी आई एम गोइंग टू अप्लाई माई लेंसेज राइट हियर. ये मैंड्रिकिन के हैं इन द शेड हेना नाइट्स. कॉन्टैक्ट लेंसेज लगाने के बाद थोड़ी देर ये क्राइम फेस तो रहता ही रहता है. सो आई एम नॉट श्योर इफ यू कैन सी दिस और नॉट, बट माई आईब्राउज नीड सम इंटेंस टेमिंग राइट नाउ. लेकिन अभी मेरे पास टाइम नहीं है, सो आई कैन नॉट डू दैट. लेकिन किसी भी अच्छे मेकअप लुक के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी जो आईब्राउज हो वो बिल्कुल शार्प और क्लीन लगे. सो आई एम जस्ट गोइंग टू टीच यू हाउ आई ट्राई टू डू दिस, कि वो लगें कि बिल्कुल ऐसी है कि जैसे बनी हुई ऑलरेडी. अब आपको पता ही होगा कि जब हमारी आईब्राउज बनी हुई होती हैं तो जो ये वाली लाइन होती है नीचे वाली, ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होती है. दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू रिक्रिएट ओवर हियर, कि यहाँ की जो लाइन है वो बिल्कुल स्ट्रेट नजर आए. और दूसरी चीज जो ये आर्च होता है ये भी बिल्कुल क्लीन होता है, बिल्कुल क्लीन एंड क्रिस्प, एंड दैट्स व्हाट वी आर गोइंग फॉर. Do the same on the other eyebrow. So अभी आई एम श्योर यू कैन सी के नेक्स्ट लेवल abnormal eyebrows बने हुए, बट अब हम लेंगे स्पूली ब्रश एंड we're just going to nicely brush this out. अब ऐसे तगड़े जॉब्स के लिए आई ऑलवेज गो फॉर माई लॉरियल कंसीलर, बिकॉज ओ माई गॉड इट इज़ अमेजिंग. बहुत ही नेक्स्ट लेवल हाई कवरेज है एंड आई लव हाउ इट वर्क्स. अब मैं करूँगी ये कि जितना भी एक्स्ट्रा स्पेस है मेरे आईब्राउज के इर्द गिर्द दैट आई नो इज अनटाइडी, मैं इसको उस जगह पे लगा दूंगी. जस्ट सी व्हाट आई एम डूइंग. So can you see what I did over here? So now I'm going to do the same on this eyebrow as well. तो अब मैंने ये दोनों साइड्स पे कर लिया. Now I'm going to take a brush like this one. आप इससे पतला ब्रश भी ले सकते हैं, but I'm more comfortable with this one क्योंकि मैं usually ये यूज़ करती हूँ. And I'm just going to blend this entire thing nicely. जो ऊपर लगा हुआ है उसको मैं eyelid के ऊपर ट्रांसफ़र कर दूँगी. इस तरह से मेरी eyelid स्पेस भी सही से कंसील हो जाएगी
और जो आईब्राउ के ऊपर वाले पार्ट पे लगा हुआ है, आई विल जस्ट कंसील दिस इनटू द फोरहेड एरिया ताकि उधर चला। ये लुक इतना ग्लैम लगता है लेकिन इट्स सो सिंपल टू क्रिएट। आई टेल यू व्हाट आई एम डूइंग नेक्स्ट विद माय आईज। So I'm going to take the quick flick eyeliner. You can take any eyeliner that you have on yourself. और इससे अब मैं एक winged eyeliner लगाऊंगी। हम सबको पता है वन आई इज सो इजी टू डू, बट इसको रेप्लिकेट करना इज रियली हार्ड। सो आई एम गोइंग टू ट्राई माई बेस्ट कि ये रेप्लिकेट हो जाए, बिकॉज ये कुछ ज़्यादा ही अच्छा आईलाइनर बन गया आफ्टर रियली लॉन्ग। ओके, सो आईलाइनर फाइनली रेप्लिकेट हो गया। आई एम ग्लैड अबाउट दैट। आईलाइनर तो लग गया। सो नाउ आई एम गोइंग टू टेक द सेम कंसीलर और इसको मैं लगाऊंगी अपनी अंडर आईज पे, क्योंकि आप आई मेकअप जब नीचे करने वाले होते हैं उससे पहले इट्स इम्पॉर्टेंट दैट योर अंडर आईज आर कंसील्ड, या आपको जो भी उसकी करेक्शन करनी है वो हो चुका हुआ हो, बिकॉज देन इट्स ईजियर टू वर्क द आई शैडो अंडरनीथ। Now that the concealing part is done under the eyes, I'm going to take the Maybelline Tattoo Eyeliner, and this one is such a good eyeliner. अगर आप इसको eyeliner के तौर पे यूज़ करना चाहें या अगर आप इसको काजल के तौर पे यूज़ करना चाहें अपनी अंडर आइज में, it's so nice, बिल्कुल नहीं smudge होता, so that's the best thing. So अब I'm going to put some kajal under my eyes. I love the fact that it's so dark. And now I will go ahead with some mascara onto my eyes, and this is my favorite mascara. You guys already know that. तो जब मुझे कोई full glam वाली lashes चाहिए होती है ना, like crazy वाली, so this is what I go for because what results, man. Now I know कि मेरी lashes naturally भी लंबी हैं, लेकिन please, can you see the difference? I mean, this is crazy stuff, okay? When I'm telling you, you have to take my recommendation. अब जाकर मैं अपनी eyelids को set करूँगी, तो उसके लिए भी I'm going to use the same face powder जो कि मैं अभी अपने पूरे चेहरे को set करने के लिए भी यूज़ करूँगी। लेकिन इसके लिए मैं लूँगी एक fluffy सा आई shadow brush, ऐसे थोड़ा सा इसके ऊपर लगाऊँगी, and then I'm just going to set my eyelids. आइज का पार्ट बस इतना ही था और कितना सिंपल था, राइट? सो नाउ वी आर गोइंग टू गो अहेड विद द फाउंडेशन पार्ट. यस, आज हम फाउंडेशन लगा रहे हैं बिकॉज आई वांट टू गो फॉर अ फुल ग्लैम. तो फॉर दैट आई एम गोइंग टू बी यूजिंग द फिट मी फाउंडेशन इन द शेड 128. आई लव दिस फाउंडेशन. द फैक्ट कि ये इतनी कन्वीनियंट है फॉर एनी पर्सन टू बाय एनी वेयर दैट दे लिव, दैट्स नंबर वन. दूसरी चीज़, ये इतनी अफोर्डेबल है कि कोई भी इसको ले सकता है. एंड द थर्ड थिंग कि आप इसको जितना बिल्ड करना चाहो उतना बिल्ड कर सकते हो. आई पर्सनली लाइक मीडियम कवरेज. मुझे इतनी ज़्यादा हाई कवरेज फाउंडेशंस नहीं पसंद, सो आई कैन वर्क विद दिस. लेकिन अगर आपको ये हाई कवरेज भी चाहिए, you can work your way along with this and just build up the coverage eventually. Now I'm just going to take some foundation on top of my brush. This is just something that I like to do. इससे होता ये है कि मेरे पास फिर ज़्यादा ब्रश पे फाउंडेशन लगी रहती है. And now I'm going to start dabbing this all over my face.
Now this is the second dot of foundation on this, and this is for my neck. As you can see कि foundation अब लग चुका है. So now I'm going to go ahead with a setting spray like this one. लेकिन obviously आंखों को बचा के, वरना फिर this can smudge. So आंखों को बचा के I'm just going to spray this all over my face. Now as you can see that the setting spray has set. So now I'm going to take the Age Rewind concealer in the shade Neutralizer. ये बहुत ही एक fair tone shade है और इसको मैं use करती हूँ highlight करने के लिए. So now I'm going to go ahead and highlight my highlighting zones. This is the part that will justify the fact कि मैंने अगर एक dark foundation लगा भी ली है तो ये इसको neutralize करेगा. Now I'm quickly going to blend this. इतना टाइम हो गया since I've not done such a full face of makeup. So now I'm going to go ahead and contour my face. So this part is contoured. Now I'm just going to go ahead with the jawline and contour that as well. इसको हमेशा हल्का रखना होता है, इतना काला नहीं कर देना होता कि it starts looking like a black patch or a brown patch on your skin. Now you can see that half of my face is nice and contoured. At least features तो नजर आ रहे हैं कि भाई ठीक है कोई features तो हैं. I'm going to do the same to the other side. Now I'm just going to take the same powder that I used previously and I'm going to set my under eyes, a little bit of my forehead and the other areas that I highlighted after applying the setting spray. हम next level snatched तो लग रहे हैं, लेकिन it's time to bring back some color onto our faces. So now I'm going to go ahead with the blush on. Now I will also quickly add some highlighter into the look because that's what it's missing. Now it's time to officially add the last spray onto our face, which is the makeup setting spray all over again. And this will be the last time that we do this, okay? Now for the lipstick, I'm going to be using a very nice and soft pink colored lipstick. मेरी वाली टूट गई है, so I just use a lip brush to apply it because it's so pretty. ये Makeup Revolution की है in the shade Tease, and it's such a pretty pink. Now the look is complete. We're just going to go ahead and add these very beautiful matching jhumkas to our look to complete it and make it look really, really formal. अब यूजुअली ऐसे लुक के ऊपर मैं अपने बाल खुले रखती, but because I was really enjoying कि वो किस तरह से लग रहे थे when they were closed, so I'm going to try. I know it's not like me, लेकिन I'm going to try to make a full-on tight, slick back bun with my hair right now. It's so out of character, but I'm still going to do it. And we're finally at the end of this video. So if you liked it and you learned something from it, please don't forget to give this a thumbs up and please don't forget to subscribe to my channel. I will catch you guys in the next video.